So there we have for you a live visual. Dasyo akan gemengeta ansingni Honorable President Madam aro Honorable Governor Sir dak sari sesko again uni zamanu ansing baksa ungen. So our honorable guests, our Honorable President Madam as well as our Honorable Governor Sir will be taking a 2-minute recess before they join us here on the dais. Welcome our Honorable Chief Minister, Sir. Honorable Education Minister, Sir, as well as our Honorable CNRD Minister, Sir. We also welcome onto the dais our Honorable Governor of Meghalaya, Sir Pagu Chauhanji,
Our most honored guest for today, our Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, is here. Please rise and welcome her to this venue. Anseng rakbe e jakpadokke, Madam Koram Chaksuna. May I now call on Honorable Minister, Community and Rural Development, Shri A.T. Mandal sir, to kindly deliver the welcome address. A very good morning to all of you. Most Honorable President of our great nation, Srimati Droupadi Murmu ji, our Honorable Governor of Meghalaya, Sri Phagu Chauhan ji, our Honorable Chief Minister, Sri Conrad K. Sangma ji, our Honorable Education Minister, Sri Rakham A. Sangma ji, my colleagues in the Assembly, esteemed guests, ladies and gentlemen. It is with great pleasure and deep sense of pride that I stand before you today as we gather to welcome the Honorable President of India, Sri Droupadi Murmu ji, our Honorable Governor, Sri Phagu Chauhan ji, our Honorable Chief Minister, Sri Conrad K. Sangma ji, and my colleagues and the esteemed guests to this august occasion. I would also like to extend warm welcome and greetings to all the women representing the self-help groups, farmers, and youths who have joined us enthusiastically to welcome our esteemed guest, the Honorable President of India. Madam President has been a beacon of wisdom, leadership, and inspiration for our nation, and especially to the Northeast region. As the first person from the tribal community to hold the highest office in our great nation, her presence in Meghalaya is not just symbolic, but carries the promise of inclusivity, progress, and empowerment. Today, we are privileged to host Madam President in the serene and picturesque landscape of Meghalaya, a state known for its rich cultural tapestry, lush greenery, and warm-hearted people. Madam, we are also eager to share our aspiration and achievement with you, in a confidence that your guidance and support will further bolster our efforts towards progress and prosperity. You have been a working woman for last 45 years and are no stranger to the challenges faced by Indian women to pursue, to break the barriers, to support women like you who aspires to attain greater heights. The self-help group movement has proven to be a powerful tool. It has been instrumental for connecting the rural women with livelihood opportunities and in the process empower them as decision makers. The efforts of our government have been fruitful
And as an outcome, self-help group operating in the state have increased from 5,800 to more than 44,500, impacting about 4.37 lakh households across the state. More than 38,500 self-help groups have been alone formed in the last 6 years, and so far 348 crores has been provided as support fund. In our aspiration to further empower women, a substantial amount of rupees 25 crores will be disbursed today as community fund, benefiting 1,422 village organizations. Additionally, loans worth of 32 crores will be sanctioned to 1,083 self-help groups. Madam, these livelihood opportunities are also extended to the farmers of the state, with over 80% of the citizens engaged in agriculture and allied activities. They are the backbone of our society. Acknowledging the crucial role of farmers, the state has adopted a farmer-centric, community-based, bottom-up approach to outcome challenges in this sector. Madam, the state has also set a vision of doubling farm production, productivity, and the farmers' income. In order to achieve this, along with strengthening the backward linkages, the state has been expediting efforts in marketing and branding these products. Key flagship programs like Focus Plus have been able to benefit over 3.5 lakh households with funding of over rupees 175 crores through collectivization and market linkages. A special intervention program have been designed and taken up in mission mode for the key products of the state. To make this initiative fruitful, the youths of our state are the key resources. Madam, Meghalaya's strength lies in the large youth force in the state who form around 70% of the state's population. To empower the youth, we have launched a skilling program like a Skills Meghalaya and Prime program to create a conducive environment for the youths to achieve their entrepreneurial dream. This has put Meghalaya along the top 3 states for having India's best startup system. Madam President, all these initiatives are the brainchild of our dynamic Chief Minister, Sri Conrad K. Sangma, whose vision is to see that Meghalaya grows in rural areas, and funding has been provided so that sufficient financial investment is provided so that farmers can live up to their dreams and youths can fulfill their hope and aspiration. Madam President, in the embrace of Meghalaya's natural beauty, we hope that this visit will serve as a source of inspiration for our continued efforts towards collective growth and development. Once again, on behalf of the people of Meghalaya, I extend a warm and sincere welcome to you, Madam. May this visit of yours be marked meaningful discussions and lasting camaraderie that transcends time and space. Kublai, Mithila, Jai Hind. Thank you, sir, for welcoming everyone to this venue and also for your enlightenment. We shall now have the felicitation of our guests whose presence here has made our function even more memorable. We begin our felicitation with the Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, as we welcome her with these tokens to be handed out by our Honorable Chief Minister, sir. Thank you, Madam, and it is our pride and pleasure to have you with us. We now felicitate Honorable Governor of Meghalaya, Shri Phaggu Chauhan ji. Thank you, sir, for your generosity in joining us, sir.
Also thank all our guests and dignitaries for gracing us today. In the center stage is the self-help group of North Garo Hills, here to present us their special number titled Kadongani, which translates to hope. Thank you for hoping against hope, because this is the need of the hour. Thank you, North Garo Hills, SSG, for your heartfelt number. We shall now have the laying of foundation stone for the new integrated administration complex Tura by our Honorable President. May I please request Honorable President Srimati Droupadi Murmu ji to kindly do the honors. Gambate, rakbate, zakpako dokatna. Thank you, Honorable President Madam, for this great new start. A success story will now be shared with this gathering. So may I please invite Srimati Vanilla Di Sangma, Alakpati Didi, to share her side of her story. माननीय राष्ट्रपति महोदय जी एवं सभी सम्मानित आप सबको नमस्कार। मेरा नाम वनीला दी संगमा है और है आपके समक्ष उपस्थित होने का सौभाग्य प्रकट करती हूँ।
मैं थिबाफारा विलेज दालु CNRD ब्लॉक वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट सी हो और मेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम है रतम गताल SSG। मैं एक छोटा सा फूड प्रोसेसिंग बिजनेस चलाती हूँ और मेरे प्रोडक्ट्स है बनाना चिप्स, जैकफ्रूट चिप्स, फ्रूट जूस एंड स्क्वाश, पिकल्स, मशरूम भी है और कुछ स्पाइसेस। फूड प्रोसेसिंग के अलावा मेरे पास स्मॉल स्केल फिगरी पोल्ट्री और गोटारी फार्म भी है जो मैंने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेके शुरू किया था। जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का बाप नहीं थे तब मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि मेरा अलावा कोई कमाने वाला नहीं था। मैं 8 रुपये डेली कमाती मजदूरी करके और उसी से अपनी बच्चों का ख्याल रखते थे। 2009 महीने में 3000 रुपये SSG लोन लेकर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। जैसे कि दोबारा मैंने 1 साल बाद SBI बैंक से 5,000 लोन लिया ताकि अपना बिजनेस और अच्छा से कर पाऊँ क्योंकि मेरा पेमेंट अच्छा था। मुझे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट मिला। जिसे चीफ मिनिस्टर चैंपियनशिप से भी मुझे 1 लाख का अवार्ड मिला और प्राइम से भी 1 लाख के सपोर्ट मिला था। SSG और BO की तरफ से भी मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। SSG के मदद से हुई हूँ। मैं NLM डिपार्टमेंट से सभी लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मथेला कुबलाई सिबुन, थैंक यू। Thank you, Srimati Vanilla Di Sangma, for your story and especially for presenting it in Hindi. Dhanyawad, Srimati Vanilla Di Sangma. Disbursement of community fund for 3 women from village organizations together and award of certificates to 3 SHG women will now begin as our Honorable President Madam hands out these recognitions to the recipients today. So may I please request our Honorable President Madam to kindly hand over these checks and certificates to our recipients today. Srimati Aidalin Lingdo Nonglait, Srimati Yumiki Lingdo, Srimati Norita Di Marak are from 3 different regions of Meghalaya, being given a check on behalf of all SHGs for an amount of Rs 25 crores for 1,422 village organizations and an amount of Rs 32 crores being sanctioned as bank loans from SBI, MRB and MCAB banks for 1,083 SHGs. Please put your hands together for our recipients today. Changsatay yamang na jakpa kodukat na. Now we have awardees of certificates to 3 SHG women individually. Srimati Angela Makri, Lakpati Didi,
who has earned an income of more than 1 lakh in a year, Srimati Angela Makri. Our second recipient is Srimati Vanilla D. Sangma, who was just here sharing her side of the story, a Lakpati Didi. And finally, we have Srimati Tinamuni Armarak, a business correspondent who is an SHG member providing banking services to the last mile. Ms. Tinamuni Armarak. Thank you, Honorable President, Madam, and our dignitaries for doing the honors. May I now invite our Honorable Chief Minister, Sir Conrad K. Sangma, to speak on this auspicious occasion. Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, our respected Honorable Governor, Shri Phagu Chauhan ji, my colleagues in the Cabinet, Shri A.T. Mondal, Honorable Minister of CNRD, and Shri Rakham A. Sangma, the Honorable Minister for GAD, all the other esteemed dignitaries who are present out here, all the members of different self-help groups, all different farmer groups, my young entrepreneurs, and all my dear friends who have joined us here today to be part of this very, very historic moment. At the very outset, I would like to express my gratitude to our respected and honorable President of India for her maiden visit to our state. Being the first tribal president of this country, it is indeed a very special moment for each and every one of us. I do remember when my late father, late P.A. Sangma ji, had raised this voice that a tribal also should represent or should be at the highest post in this nation. And it gives me an emotional feeling today to see that his dream, after a decade of him contesting the election in 2012, that this dream that he had has today been fulfilled by you, Madam, and that you are present here today in our state. And therefore, this visit of yours is even more special to all of us. So once again, I thank you for taking your time and coming here to be part of this program. This program is even more special for us because today we have asked our different self-help groups, and almost all of them are women self-help groups. As our Honorable Minister was mentioning just a few minutes back,
that we had less than 4,600 groups when we had taken over the government in 2018. But in a matter of 5 years to 6 years, we have been able to raise this number of groups from a mere 4,600 to touching almost 45,000 groups today. Almost one woman from every rural household is today part of some self-help group or the other. And the reason why this is very important for us is our government has always seen development and work and approached it in a much more holistic manner. For us, we don't believe in scheme-based development. We believe in stakeholder-based approach. We believe in ensuring that there is a purpose-driven approach. मैडम, जैसे आपको मालूम है कि सरकार में बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, लेकिन अगर हम स्कीम के बेसिस पर डेवलपमेंट का काम करें तो हम सिर्फ स्कीम पे फोकस करते हैं। हमारी सरकार का अप्रोच अलग है। हम लोगों ने स्टेक होल्डर को लिया है, और इसमें स्टेक होल्डर कौन है? इसमें स्टेक होल्डर हमारी महिलाएं हैं, हमारे स्टेक होल्डर हमारे युवाओं हैं, हमारे स्टेक होल्डर हमारे किसान हैं। और हम चाहते हैं कि हम इन्हें बीच में रखकर जो भी स्कीम बनाए, जो भी प्रोग्राम बनाए, एक होलिस्टिक अप्रोच में हो, एक पर्पस ड्रिवन अप्रोच में हो। और इसलिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट जो हमारे स्टेट में शुरू हुआ, वो एक्चुअली शुरू हुआ हमारी महिलाओं के हेल्थ से। शुरुआत में मेघालय में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, और इसे कम करने की जो हमारी लक्ष्य थी और हमारी सोच थी, इसके पीछे काम करते करते हमें एहसास हुआ कि अगर हमें महिलाओं का स्वास्थ्य या मैटरनल मोर्टेलिटी या अलग अलग हेल्थ इश्यूज को अगर हमें इंप्रूव करना है, तो ना सिर्फ मेडिकल अटेंशन, लेकिन इकोनॉमिकली हमारे महिलाओं को हमें एम्पावर करना है। और तब हमारा जो ये एक तरीके से एक मिशन शुरू हुआ, और हमने कहा कि हम इस मिशन मोड में काम करेंगे, स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच काम करेंगे। और आज इसकी वजह से मैम आपको जानकर खुशी होगी कि आज हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो 2018 में था, वो घट के आज 50% कम हो गया है। और इसकी वजह से आज बहुत सारी हमारी महिलाओं को आज इसका जो है बेनिफिट मिल रहा है। और इसी लक्ष्य से और इसी सोच से हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। आज आपने हमारी एक बहन की जो हमारी जो स्पीच है आपने सुना। एक समय ऐसा था जब वो मजदूरी करके अपने बच्चों को खाना खिलाती थी, अपने घर को, अपने परिवार का देखभाल करती थी। लेकिन ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट की वजह से, अलग अलग प्रोग्राम्स की वजह से, लोन्स जो उसको मिले, अलग अलग जो सीएम सपोर्ट मिला, सीएम स्कीम से सपोर्ट मिला, उसकी वजह से आज वो एक सक्सेसफुल एक लखपति दीदी जैसे हमने कहा, वो एक उस लेवल पर आज पहुंच चुकी है। और ऐसे बहुत सारे आज हमारे स्टेट में सक्सेस स्टोरीज हैं। तो इसलिए आज का ये प्रोग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैडम आप यहां आए हैं, ये हमारी महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन है कि आज आपके यहां पे रहने से उनका विश्वास, उनका ओवरऑल जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज आपके यहां पे आने से फ्यूचर में भी हम इन्हें, हमारी महिलाओं को हम और भी आगे बढ़ा पाएंगे। सिमिलरली मैम, फॉर द यूथ ऑल्सो, द डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स दैट वी हैव, Meghalaya has got one of the best startup programs in the country today. पिछले 2 साल में
भारत सरकार ने हमें एक अवार्ड दिया जहां पे हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को स्मॉलर स्टेट्स के बीच में मेघालय को सबसे अच्छा जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप इकोसिस्टम मेघालय को उसका नंबर 1 अवार्ड मिला। और हमारा मकसद यही है कि हमारे यहां पे कम से कम साल में 80,000 यूथ वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं। 80,000 यूथ्स ज्वाइन द वर्कफोर्स एवरी ईयर। एंड देयरफॉर until unless we do not bring out entrepreneurship in our system, we will not be able to create the jobs that we require. And hence, combining self-help groups, combining entrepreneurs, combining farmers, and giving a holistic picture and approach to the programs and the development process is the only way to move forward for our state. And hence, ma'am, today, these programs are running very successfully. And as I said, we have almost saturated the rural households where today women are in one self-help group or the other. We have a massive entrepreneurship program, and we have one of the largest farmer producer group programs also, where we are giving different support through processing plants, through loans, through grants to our farmers to ensure that we are able to achieve the doubling of the income, which Honorable Prime Minister has been always very, very particular about, by ensuring that multiple support is given to our farmers. And hence, ma'am, I will not take much time, but I once again would like to thank you for your visit. It will definitely encourage our women folk and encourage our youth and encourage our farmers also. Kasarar pingrang anga dintang mancha ya chol kura ay na simang sakkan chiko anga matela kusyo nga arwan chini India song ni President Madam Droupadi Murmu ji ko ba anga gisakatong gamakchi anga matela ska na simang sakkan chin uya bia chini India ni skangpa tribal community ni skangpa anchini India ni President ongaha unig kemudian anching sakkan chinan na men kusyo ngani ra songchani no kapai soko matelani sal somayo nga anga dingtang bancha anchini President ko aron na simang sakkan chiko ba ya program monari banina anga gisakatong kamakchi na simang sakkan chiko ba anga matelna kusyo nga. So with these few words, I once again welcome you, ma'am, to Garo Hills and to the state of Meghalaya. We will be going from here to Shillong, and we'll be having different programs in Shillong also. But on behalf of the people of Garo Hills, we thank you once again. You are the first president of this country who has come to Tura and spend one evening here in Tura. I think this is one of the most historic moments for the people of Garo Hills, and for generations and for decades to come, people will not forget this particular moment. So once again, I wish you the very best, and once again, I thank you, ma'am, for your visit to our state of Meghalaya. May God bless each and every one of us present out here. May God bless you, madam, and may God bless our great nation, India, and our state of Meghalaya. Kublai Shibun, Matela, and Jai Hind. Thank you, sir, for your words of wisdom and encouragement, and also your support in the upliftment of SHGs, and also for thanking our Honorable President Madam for her visit to our very own Meghalaya on behalf of everyone here. Thank you, sir, once again. We have in our midst our Honorable Governor, Shri Pagu Chauhanji, who will now share his thoughts with us.
भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री कागराड फंगमा जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री थॉमस संगमा जी, तुर्रा के माननीय सांसद श्रीमती अगाथा संगमा जी, माननीय ग्राम विकास मंत्री श्री A.T. मंडल जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री रकम फुंगमा जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित, नेक महाजन, वरिष्ठ अधिकारी, आजीविका समूह की हमारी प्यारी बहनों, मीडिया के मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, आज हमारे जनजाति बहुल मेघालय राज्य के इतिहास का एक बहुत गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि हम सबकी प्रेरणा भारत की प्रथम नागरिक माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महिला आजीविका समूह के इस विशाल आयोजन में आज हम सभी के बीच में स्वयं उपस्थित हैं। मैं महिला स्वयं सहायता समूह के इस राज्य के व्यापी कार्यक्रम में अपने राज्य के सभी बहनों एवं सभी नागरिकों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। महोदय, मेघालय मुख्यतः मातृ सत्ता प्रधान 3 प्रमुख जनजातियों गारो, खासी और जैंतिया के नाम से 3 मुख्य पहाड़ी क्षेत्रों से बना है। इस राज्य में महिलाओं को हमेशा से ही पहली वरीयता मिलती हुई है। खेती, व्यवसाय, नौकरी के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों में के माध्यम से मेघालय की बहनों वरन पूरे मेघालय राज्य विशेषतः महिलाओं के बीच में एक नई चेतना, ऊर्जा जागृत हो रही है। आज हमारे देश के वर्ष 2047 में से अपनी आज़ादी के 100वीं सालगिरह के समय तक विकसित देश बनाने के सपने और संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के महान जनजातीय नेता बिरसा मुंडा जन्मस्थली से की। एक विकसित भारत के निर्माण में हमारे ट्राइबल समाज, विशेषतः हमारी महिलाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य में आजीविका समूह की दूर दराज से उपस्थित हमारी बहनों अपने हुनर, मेहनत और सामूहिक ताकत से आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के साथ मेघालय राज्य आज देश के विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं अपनी इन सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं राज्य के माननीय युवा मुख्यमंत्री श्री कागराड संगमा जी को, उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, उन्होंने राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ने के एक सुनहरा अवसर दिया है। मेघालय राज्य में FHC सदस्यों के बीच 20 करोड़ की सहायता राशि वितरित की जा रही है, जिससे 2000 समूहों और 20,000 परिवारों का लाभ होगा। इसके अलावा 1000 FHG समूह के लिए स्वीकृत और ऑफिशियल तौर पर जारी किए जाएंगे, जिसके लिए महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। आज हम बड़े गौरव के साथ यह कह सकते हैं कि मानवता की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना अधूरी है। आज
मुद्दा महिलाओं को केवल विकास का ही नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है। इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के प्रति पुनः अपना आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों और आजीविका समूहों के बहनों को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मितेला खुबलई, जय हिंद, जय भारत। Dhanyawad, Mananiya Governor Shri Paghu Chauhan ji. Thank you, sir, for sharing your thoughts with us and making this day even memorable with your presence. It is our greatest honor and privilege to have our Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, gracing us in this function today. May I take this honor of inviting Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, to address this gathering. Governor of Meghalaya, Sri Paghu Chauhan ji, Chief Minister Sri Karnar Sangama ji, Minister of General Administration Department, Government of Meghalaya, Sri Rakam A. Sangama ji, Minister of Community and Rural Development, Government of Meghalaya, Sri A.T. Mandal ji, distinguished guests, members of self-help groups, ladies and gentlemen. I am delighted to participate in this program and interact with the women of self-help groups of Meghalaya today. During my visits to various states and union territories, I have met and interacted with many SHGs of women. During these interactions, I have noted that they all are happier and more satisfied in their lives after they started earning and contributing economically to their families. The women of rural and remote areas have discovered a new version of themselves by joining such self-help groups. I have witnessed the same confidence and energy among all women present here today. I would like to compliment Srimati Walinti, a resident of Umkrem village, who has done an exemplary work in adoption and promotion of natural farming practices. She has not only undertaken such activities herself, but motivated and helped many other farmers of her region to adopt eco-friendly practices in agriculture. I also appreciate the women of other self-help groups of Meghalaya who are earning livelihood through bakery and other activities and are contributing to the region's economic growth through new initiatives. You are an inspiration for the people of your region. I am told that Lakpati Didi entrepreneurs are at present here today. The Lakpati Didi initiatives aims to transform the rural economy and improve quality of life of rural people by promoting women entrepreneurship. I am happy to know that National Rural Livelihood Mission is bringing about a positive change in the lives of members of SHGs, their families, and the rural areas as a whole. Their growth journey will inspire other women of the state and the region to come forward and become entrepreneurs. Ladies and gentlemen, the Government of India is making every possible effort to ensure that women contribute actively
and in large numbers in the socio-economic development of the country. Several steps have been taken to improve women's participation in the workforce. Many protective and supportive provisions have been included in labor laws. The government has launched many schemes which have proved helpful in raising the standards of living of women. The government has not only taken several steps for the social and economic development of women, but has also taken major steps towards ensuring their political participation. The Nari Shakti Bandhan Act has provisions to reserve 1/3 seats for women in the Lok Sabha and legislative assemblies. However, there is still a long way to go in the direction of women empowerment. Sometimes women struggle to find their rightful place in their own families. It is high time that people start recognizing the value and qualities of women around them and support them. Ladies and gentlemen, the idea of women-led development can be implemented only when the women get the freedom to make their choices. With economic independence, this has become a reality to some extent. During one of my interactions with women of self-help groups in Srinagar, one woman shared how she has also started taking decisions regarding the renovation of her house or the furniture to be brought. I do not mean that women can take decisions only if they are earning members of the family, but economic self-reliance definitely brings a greater self-confidence in women. I would like to stress here that you have to keep moving ahead and also hold hands of other women to take them forward. This is not your journey alone, but that of large number of women in our country who are yet to explore the opportunities that lay beyond the four walls of their homes. You must become an inspiration for other women of your region and the nation. Ladies and gentlemen, the empowerment of women in social, economic, political, and spiritual spheres is essential for the country to realize its vision of becoming a developed nation by 2047. India's women are making a mark and paving way for other women in every field, whether it is defense, science and technology, sports, education, entrepreneurship, agriculture, or any other field. They just need some words and small actions of encouragement, a pat on the back. I am sure that we will see and experience more positive changes in this direction in near future. मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। इतने सुबह सुबह इतना सारा महिला मुझे बताया गया, ये 20,000 से ज़्यादा महिलाएं 10 बजे से पहले यहाँ आके उपस्थित थे। एक दिन था, महिलाओं को किसी भी मीटिंग में देखने को नहीं मिल रहा था। मुझे बताया गया है, मुझे चीफ मिनिस्टर ने एक दिन मुझे बता रहे थे, ये जो मेघालय, ये महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यहाँ शादी में भी दामाद अपने पत्नी के घर में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ और बेटियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ महिलाओं पॉपुलेशन
ऑलमोस्ट 50% है। हम सब जानते हैं। हम सब चलने के लिए हम भगवान ने 2 पाँव दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, क्योंकि आसानी से और जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ सके। ऐसे ही दुनिया में भगवान ने 2 अलग अलग जीव को भेजे हैं, एक महिला, एक पुरुष, क्योंकि आसानी से सामाजिक, आर्थिक जो भी सुविधाएं और विकास कर सके, आगे बढ़ सके, मिलजुल के काम कर सके। तो सोचिए तो एक अकेला पुरुष या एक अकेला महिला, जैसे कि यहाँ एक बहन ने अपने जो बात यहाँ बोल रही थी, बोले कि मैं एक अकेला कमाने वाली थी। तो फिर भी जब सहयोग आ गया गवर्नमेंट के तरफ से, सुविधा बनाया गया बैंक तरफ से, तो आसानी से अपने आर्थिक अवस्था को सुधार पाए और आगे बढ़ पाए। और ऐसा काम किया कि गवर्नमेंट से भी उनको अवार्ड मिल गया। महिलाओं के पास ऐसे पोटेंशियलिटीज है, क्वालिटीज है, उनको ढूंढना होगा। जो चीफ मिनिस्टर ने बता रहे थे पहले, मैं आने से पहले, कि केवल 4,000 महिला ग्रुप थे, अभी 45,000 महिला ग्रुप आ गए हैं। ऑलमोस्ट सभी फैमिली के महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में कवर्ड है। वो भी आत्मनिर्भर है, अपने पांव पे पड़े हैं, कुछ सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्वाधीनता, इकोनॉमिकली और सशक्त हो गए हैं, मीन्स मेंटली और कॉन्फिडेंस हो गए हैं, अपने अपने आत्मविश्वास, यस हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं, हम में भी दम है, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और करना ही होगा। ये केवल परिवार के लिए नहीं या समाज के लिए नहीं, राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एक तिल करके आज जो देश आगे बढ़ रहे हैं, देश एक अकेला आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि देश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, देश के लोग सहयोग कर रहे हैं, देश के लोग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना होगा और गवर्नमेंट का जो सुविधा उसको लेना होगा, वो करना ही होगा। क्योंकि कहते हैं ना, एक अकेला थक जाएंगे मिलकर बोझ उठाना। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक अकेला हम कुछ नहीं कर पाते। आज के सहयोग करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे बैंक से, बहुत सारे संस्थाएं हैं, NGOs है, हम किसी से भी सहयोग ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ना ही होगा। आप कर रहे हैं, इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरह बढ़ते रहिए, काम करते रहिए और अपने आप में जो हुनर है उसको दिखाना चाहिए। और आपके देख जो बहनें अभी तो ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं, वो भी आपको देख करके जरूर वो भी शामिल होंगे, वो भी आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जेनरेशन मुझे लगता है और भी सशक्त बनेंगे, और भी एजुकेटेड होंगे, और भी इकोनॉमिकली, सोशली और भी सशक्त बनेंगे और देश आगे बढ़ेगा। जो प्रधानमंत्री में कहते हैं, प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं कि 100 साल हम जो मनाएंगे 2047, वो ऐसे साल होगा जो पूरा देश विकसित देश होगा। भारत एक विकसित देश और विकसित देश के हम एक नागरिक बनेंगे। दुनिया के लोग भारत को देखते रहेंगे। ये काम करने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है, महिलाओं का भी। अपने आप को कभी कभी कहते हैं हम तो अनपढ़ है, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं है। आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा केवल एकमात्र माध्यम नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं, हर हाल में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सहयोग गवर्नमेंट कर रहे हैं। इसीलिए आप भी
उस सुविधा का आप लीजिए, उस सुविधा लीजिए, सुविधा के बारे में जानिए और लीजिए और आगे बढ़िए। In the end, I wish you all a bright future. Dream big and never stop pursuing your dreams. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Shall we all rise for the national anthem? Sakantikon national anthem na chakachina mulmulata. So I request everyone to kindly remain in your seats. Sakantikon nasimangni biaptang tongo dongatchina mulmulatainga, anchingni Honorable President Madam, dao nasimangni gisep kataan, nasimangko grongjola katari pakangena, nasimang manderani chin kata Madam Yang Jokon chakat pabu, andiba biaponi rijat panabe matala. So our Honorable President Madam will be walking through the aisle, through the pandal here. So I request everyone to remain in your seats, but as Madam makes her way, kindly stand for her. Thank you. Nasimang sakantikon yano bang bein katenga ya stage ni janma ko skorara ko nakatobas ko gamakan me chakrang misa. Here's to women empowerment. Ay jakpadokat na tang na. Anching ni president yano na reba kapaba anching kata kapaba me chakkan. Nasimang na kadongani kumoani kaptarang ko aganang kapaba Madam President nan unigaman una manderani chin ko kata me sokat na anching Sakat na de manchokken aro Madam re pakchokon anseng jakpakodok na. It is indeed a very memorable moment for each one of us. In fact, a proud moment for all those present here. Sakanti yanodongapa namen daal rasong ganang big parang chongmotken mainan asimang anching ni skotongho samba chap chap nakrekna gata cholko mangen.
Hello.